Hello everyone. So we know that when we talk about this regulatory bodies examination, descriptive paper can be one of the biggest pain points, right? As far as your preparation is concerned. Because we know that when we talk about the objective type paper, majority of the aspirants are comfortable with the approach that they have to follow. They know the strategy that they have to revise things multiple times, solve MCQs, and they will be in a comfortable position, right? After a certain stage. But when we talk about descriptive paper, I would say there's a lot of confusion, especially among those aspirants who are just beginners. So in this video, we are going to talk about it. We will see that basically how you can design your descriptive paper strategy, what could be the right time for doing answer writing practice, what should be the priorities as far as the descriptive papers are concerned, right? All the sort of things we are going to discuss one by one as a part of this video. And basically this video is primarily in context to the NABARD grade A aspirants, right? Because NABARD grade A exam is approaching, so that is why this video is dedicated primarily to NABARD grade A aspirants. But of course, those of you who are preparing for other regulatory bodies exams too, where we have descriptive paper, for example, RBI and all, up to some extent, this video can be helpful for you. But primarily it is for NABARD grade A aspirants. Now, before we discuss all these sort of things, just a small information. So those of you who are preparing for NABARD grade A exam, you can go to the description box, click over the link, and from there you can download this free of cost ebook. And as a part of this ebook, you are going to get the decoded syllabus, solved PYQs, shortlisted sources, and a practical strategy as far as the NABARD grade A exam is concerned. Now moving forward, first of all, if we talk about the structure of the examination as far as the phase 2 exam is concerned. Now we know that over here we have paper 1 where we have general English paper, which is completely descriptive, right? And you're going to get 3 questions over here. Secondly, we have paper 2, which includes ESI and ARD, right? Economics and social issues, and ARD, agriculture and rural development. Now as a part of this video, primarily we are going to target this paper 2, because paper 1 has already been discussed in a separate video, right? So paper 2 is something that is going to be the agenda of this video. I hope it is clear to you, right? Now in paper 2, you would already be knowing that you are going to get 6 questions in the descriptive paper, and out of 6 you'll have to attempt 4 questions in the examination, right? Where 2 questions are going to be of 15 marker and 2 questions are going to be of 10 marker. I hope you already know that. Now, first of all, let me clarify that before you could prepare for the descriptive paper answer writing, right? A lot of students, what they do, they are very much concerned about answer writing. But the first and the foremost step is basically to look into the syllabus and to complete the syllabus, right? So, what should be the topmost priority? The topmost priority shall be to complete the syllabus, right? For example, this is your ESI syllabus. You can see the topics over here, which includes economics and social issue based topics. So please complete the syllabus, and then only I would say you will be in a comfortable position to do answer writing practice. Now, those of you who have not yet started their NABARD grade preparation, right? Or who have just started their preparation just I would say a few days back. So those of you, those students, what you can do instead of waiting for the syllabus to get completed, you can start doing answer writing practice after completing 2 to 3 chapters, right? So after every 2 to 3 chapters, what you can do, you can take 1 day break. And on 1 day break, what you can do, you can primarily target answer writing practice, right? And on that day you can solve MCQs also, right? Also sort of things. I would say 1 day you should keep as reserve for the descriptive answer writing practice, right? But those of you who have already completed the syllabus, or your syllabus is going to get completed very soon, what you can do, just complete the syllabus, and after that start doing answer writing practice for the different chapters. That's what you can do, right? So let me tell you that a lot of students also think that when it comes to ESI paper, then the current affairs is the only portion that they have to focus upon primarily. Let me tell you, no doubt current affair is important, you have to cover it, but please do not ignore the static topics, because if you see the PYQs, the questions have been asked from the static areas also, and very easy and doable questions, right? So if you have prepared them properly, you can basically score maximum marks over there, right? So you cannot afford to do compromise with those areas, especially that are directly from the syllabus, because as a part of those questions, the competition is already high in the examination, right? So it is very important that you're not compromising with the quality, and in order to do that, you have to do you have to basically complete the static portion in a proper manner, right? And yes, alongside you have to do current affair preparation also. Now those of you who are doing self study in context to current affairs, then I am assuming that you are already following the newspapers, right? And you are already covering the reports, right? When I say reports, those reports that are mentioned in the syllabus,
and those reports that are not mentioned in the syllabus but their theme is aligning with the syllabus, right? And when we talk about newspapers, it is primarily the current affair topics, which includes the schemes also, because we know that schemes are important as far as the NABARD graded descriptive paper is concerned, right? And those of you who are EduTab student, we have uploaded this perspective 360-degree file as a part of the portal, and let me tell you that we keep on updating it, and that is going to be sufficient for you as far as the current affairs are concerned, right? But the thing that you have to understand is that don't compromise with the syllabus. First complete the static portion, alongside start doing the current affairs, right, with respect to the ESI part, because without completing syllabus you are not expected to perform well in case of answer writing practice, and also in order to write good quality answers in the examination, right? And alongside also try to collect some data also, some facts also. For example, let us say if you are preparing this globalization topic, right? So try to have some ready-made introduction. अब globalization से अगर क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो क्या पूछ लेंगे वो, ठीक है? इतना ज्यादा भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं होगा कि आपके सिलेबस से बिल्कुल ही बाहर चल जाए, तो इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं सिमिलर रहेगी एग्जाम में, जहां पर आप ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हो। तो पहले से ही कुछ रेडीमेड इंट्रोडक्शन रखो, कुछ रेडीमेड डेटा याद करके रखो, कुछ रेडीमेड कमेटी का नाम रखो, कुछ ग्लोबल एंड आई वुड से इंडियन इंस्टीट्यूशंस का नाम याद रखो कि जो आप हमेशा किसी भी तरह वैल्यू एडिशन में लिख सकते हो इन कंटेक्स्ट टू ग्लोबलाइजेशन। So similar sort of thing, I would say fodder material you need to have for all the chapters, so that basically you are able to deliver quality information in the examination, right? So that is extremely important. So while you're completing the syllabus, what you have to do, first of all, do the static part, keep an eye on current affairs, and focus upon value addition information too. That can include data, fact, example, right? Also sort of things which you can find from the newspapers or from the internet. I hope this is clear to you. Secondly, we have ARD. Now, the best part about ARD descriptive paper is that it is completely static in nature. So you have to make sure that whatever topics are mentioned as far as syllabus is concerned, you need to have 400 to 600 words notes on those topics. If you have 400 to 600 words notes on that certain topic, that means that you are basically good to go for the descriptive paper, right? That is all what is required to be done. You don't have to make it over complicated unnecessarily. The approach is simple. If you see the PYQs, in context to ARD part, they have been asking direct, straightforward, static questions only, right? And accordingly, you have to prepare. You just have to make sure that each and every keyword, चाहे छोटा सा कीवर्ड क्यों ना दिया हो, राइट, बिल्कुल छोटा माइनर कीवर्ड क्यों ना दिया हो, उस पर भी वो शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, राइट? और आजकल तो ऐसा भी हो रहा है एग्जाम में कि अगर मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो पार्ट ए आ जाएगा 5 नंबर का और पार्ट बी आ जाएगा 5 नंबर का। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में आपको 400 लिखने थे तो 200 वर्ड्स का ये क्वेश्चन हो गया और 200 वर्ड्स का ये क्वेश्चन हो गया, राइट? सो दे कैन आस्क यू टू राइट short note on a certain topic also. So just make sure that each and every keyword that is mentioned as a part of the syllabus, you have content up to 400 to 600 words. If you have done content, then congratulations, you are going to secure good marks as far as the ARD questions in the descriptive paper is concerned, right? So it is extremely important, and the ARD strategy is very simple. इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरली चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना। इसके अलावा बस आप एक चीज कर सकते हो, आपको क्या करना है, you just have to collect some good quality data, good quality examples, and good quality schemes that basically you can write in your answer as a part of value addition. मान लो क्रॉपिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, राइट? तो आपके पास डेटा होना चाहिए कि यार इंडिया का जो क्रॉपिंग सिस्टम है कितना रेनफेड है, राइट, कितना परसेंटेज इरिगेशन है, राइट? और या फिर गवर्नमेंट ने कोई कमेटी का नाम आप लिख सकते हो कि यार गवर्नमेंट ने सो एंड सो कमेटी बनाई थी और कमेटी ने रिकमेंडेशन भी दी थी अपने विद रिस्पेक्ट टू द क्रॉपिंग सिस्टम, विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर, right? So such sort of arguments and data you can collect, and what you can do whenever you are writing the cropping system based answer, you can use this value addition information. अब एग्जामिनर अगर 10 आंसर शीट चेक कर रहा है, जब आपकी आंसर शीट आएगी तो एग्जामिनर देखेगा yes he has written something different and you are going to get competitive edge, right? It is going to make your answer look more I would say of high quality. So that is something that you are expected to do, and you have to do it for all the chapters. For example, if you are doing for fisheries, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इंडिया में फिशरी का कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया की रैंक क्या है विद रिस्पेक्ट टू द फिश एक्सपोर्ट्स, राइट? इंडिया की फिशिंग फार्मिंग आई वुड से कितना कंट्रीब्यूशन करती है as far as the GDP is concerned. You should know about the recent technologies, you should know about some good examples, right? So try to have such sort of value addition material, so ताकि क्वेश्चन आ जाए बस तो आप वैल्यू एडिशन उसमें दे पाए एंड वहां पर आप बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म कर पाए एंड यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर। दैट इज द क्रक्स, राइट? सो एआरडी में मैंने क्या बताया, क्रक्स क्या हुआ, द कंक्लूजन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द सिलेबस,
try to make good quality notes as far as the ARD's paper is concerned for the different topics, 400 to 600 words notes, right? And apart from that, what you have to do, collect the वैल्यू एडिशन मटेरियल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड इससे ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. उसके अलावा तो करंट अफेयर ही है. अब एआर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो स्कीम्स एंड ऑल है, ठीक है, और जो रिपोर्ट्स रिलीज हो रही है, राइट, तो वो रिपोर्ट्स एंड ऑल आपको पढ़नी होगी. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वहां पढ़नी होगी, नहीं तो आई वुड से बेसिकली इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ एड्यूटैब यू कैन गो थ्रू इट, राइट? बट नाबार्ड में ज्यादा रिपोर्ट का इतना ज्यादा स्कोप है भी नहीं. स्कीम का स्कोप ज्यादा है. आरबीआई में रिपोर्ट का स्कोप ज्यादा है, लेकिन नाबार्ड में स्कीम का स्कोप ज्यादा है. बट फिर भी जो आई वुड से नाबार्ड की जो एनुअल रिपोर्ट है वो एटलीस्ट आपको पढ़नी चाहिए, सो दैट यू हैव गुड अमाउंट ऑफ डेटा, ऑल्सो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट? सो ट्राई टू प्रायोरिटाइज दैट. बट दिस इज आई वुड से द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू गो फॉर, एंड आई वुड से these are to be the priority areas as far as the descriptive paper is concerned. Now the next thing is answer writing. Now let me tell you very honestly that answer writing is not rocket science. जो आपने पढ़ा है वही आप वहां पर जाकर लिख कर आओगे, बट इतना आसान नहीं है. आई नो बोलना इजी है, करना थोड़ा मुश्किल है. बट लेट मी टेल यू दैट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जामिनेशन डिपेंड्स अपॉन हाउ मच इंफॉर्मेशन यू आर एबल टू रिटेन, and on what factor it is going to be decided that what information you are going to retain. Of course it will depend upon the fact that how much you have revised, right? So revision is the key thing. once you have collected the content collect हो गया, बहुत अच्छी बात है. जब मैं कह रहा हूँ कंटेंट मतलब आपने सिलेबस खत्म कर लिया, आपके पास वैल्यू एडिशन मटेरियल है, एंड यू आर सेटिस्फाइड कि यार इससे ऊपर मुझे इन टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एंड आई एम गुड टू गो एज फार एज द कंटेंट इज कंसर्न. उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज कंटेंट एन नंबर ऑफ टाइम्स. आप एक बार दो बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा. देखो ये 10th या 12th क्लास का एग्जाम नहीं है, इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम. So it is very important that you are revising things multiple number of times, right? N number of times you have to revise as much as you can. Do not underestimate revision. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बोलते हैं सर अभी मैंने समरी शीट पढ़ी, कंसेप्ट नोट्स पढ़े, एंड नाउ आई डोंट नो, मैं आंसर लिख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा. वो इसलिए होता है मेनली बिकॉज आपने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चीज़ों को रिवाइज नहीं किया होता. और अगर आपने नोट्स बनाए फिर तो वो और अच्छी बात होती है, बिकॉज एक दो पेज में अगर आपने चीज़ों को आई वुड से समराइज करके लिख दिया है तो आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो. बट अगर नहीं भी बनाया नोट्स, इज नॉट मैंडेटरी, एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, बट द पॉइंट इज दैट यू शुड बी एबल टू रिवाइज, राइट? once you are able to revise you will be able to retain information, and once you are able to retain information you will be able to of course write good quality answer in the examination, right? So that is the key idea. That is the key idea that you have to follow. Now, what should be the approach as far as the answer writing concerned? First of all, when to start answer writing practice? Now, this question I have already addressed, right, in the initial part of the video, that basically either if you are somebody who has completed the syllabus or is about to complete the syllabus within few days, then once complete the syllabus, after that you can do answer writing practice, right? And those of you who are going to start their preparation or who have just started their preparation, what they can do after completing every 2 to 3 chapters, you can take 1 day break. And in this 1 day break, what you can do answer writing practice, you can solve MCQ, you can solve some test quiz, whatever you want, right? So these sort of things that you can do. तो अगर आप ऐसा करोगे तो हफ्ते में मैं बोलूंगा कि आप कम से कम 2 बार तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ही लोगे. और आई वुड से ये अच्छा तरीका होगा basically to get into the flow, right? So that could be the best way to start answer writing practice. और जो लोग हैं जो अगले साल टारगेट कर रहे हैं आई वुड से नाबार्ड एग्जाम को, तो आप पहले सिलेबस खत्म कर लो, चाहे तो 50% सिलेबस खत्म कर लो या फिर सारा सिलेबस खत्म कर लो, उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है? सो या फिर अब मैं बोलूंगा कि आप मान लो एआरडी आपने कंप्लीट कर दिया, अब एआरडी कंप्लीट करने के बाद यू कैन डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर एआरडी, and then you can test yourself that whether you are able to retain the information or not. But फोकस ये रखो, रिवीजन पे जितना ध्यान रख सकते हो रखो, अच्छा रिवीजन करके उसके बाद ही आंसर लिखो, then only you will be able to do the justice with the answer writing process, right? Then the next thing is basically uh, quality content, right? Now this quality content, again, this is something that I told you that it is very important. When I say quality content, I mean to say good quality arguments, good quality data, facts, एग्जाम्पल्स, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. अगर आपके पास ये टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड वे में कंटेंट कलेक्ट किया है आपने, इफ यू हैव कंसोलिडेटेड दैट कंटेंट, आई वुड से यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू गो फॉर राइटिंग एक्सीलेंट आंसर इन द एग्जामिनेशन. बट अगर आपने सुपरफिशियल रीडिंग की है, ठीक है, कुछ डेटा प्रिपेयर नहीं किया, कोई कमेटी का नाम प्रिपेयर नहीं किया, कोई आपको रिपोर्ट के नाम नहीं आते जो आप आंसर में लिख सको, यू डोंट हैव बेसिकली द वैल्यू एडिशन स्टफ, सो व्हाट विल हैपन, यू विल एंड अप राइटिंग द जनरलिस्टिक आंसर्स इन द एग्जामिनेशन, राइट? तो मतलब स्पेसिफिक आंसर नहीं लिख पाओगे, एंड दिस दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू कॉम्पिटेटिव एज. Then before you start writing answer, I told you that do sufficient revision. It is extremely important, because if only and only if you are revising, then you will be able to retain the information and you will be able to write good answers. अब इतना प्रोसेस जब एक बार आपका हो गया,
कि आपने क्वालिटी कंटेंट कलेक्ट कर लिया है, आपने चीज़ों को रिवाइज कर लिया है. आफ्टर दैट, बिफोर यू डायरेक्टली राइटिंग द आंसर, जस्ट ड्रॉ एन आउटलाइन. Why outline is important? Outline का मतलब क्या है पहले ये समझो. जैसे what you can do, you can take a blank sheet of paper. ऐसे रफ शीट ले सकते हो and try to jot down the points. For example, if you are writing points with respect to agroforestry, एग्रोफॉरेस्ट्री का क्वेश्चन है, सो ट्राई टू रिकॉल कि यार एग्रोफॉरेस्ट्री का मैं ये डेटा अपने इंट्रोडक्शन में लिख दूंगा, चलो. एंड व्हेन आई विल बी राइटिंग द बॉडी, इन द बॉडी दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट सब हेडिंग एंड दिस इज गोइंग टू माय सेकंड सब हेडिंग. और यहाँ पर एक रफ स्ट्रक्चर बना लो, सिर्फ कीवर्ड कि यार ये फर्स्ट एडवांटेज आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, और ये फर्स्ट चैलेंज आ गया, सेकंड चैलेंज आ गया, और यहाँ पर मैं ऐसे कर लूंगा, राइट. कम से कम दो दो तीन तीन पॉइंट आउटलाइन में बना लो. एंड हाउ मच टाइम इट शुड टेक इन द एग्जामिनेशन? हार्डली आई वुड से 45 सेकंड्स टू 1 मिनट. 1 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया. अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, 45 सेकंड में आराम से आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने सफिशिएंट रिवीजन की है, राइट. सो यू हैव टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली. अभी तो आप 5-10 मिनट भी लोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज अ बिगिनर. बट एग्जाम में आपको इसको 45 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर करना होगा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा. इससे क्या फायदा होता है? बिकॉज when you start writing answers, basically, if you will directly jump to starting writing answers, to start writing answers, the thoughts in your mind would be highly unorganized, right? So it is very important that you are able to draw this short blueprint, or I should say the outline. And then while writing your answer, you can just look into the blueprint कि यार ये आउटलाइन में मुझे लिखना है. उससे क्या होगा कि आपके थॉट्स बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, बार बार आपको बैक स्पेस नहीं दबाना पड़ेगा. एंड बेसिकली ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम आल्सो. तो इस शुरू के 45 सेकंड 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये अगर आपने सही से कर लिया, अच्छे से डेडिकेट कर दिया, तो बाकी के जो आपके 17-18 मिनट है वो बहुत अच्छे से जाने वाले हैं, क्योंकि उससे फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. आप बार बार ये नहीं सोचोगे अभी क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, यार ये पॉइंट ऊपर आना चाहिए था, ये पॉइंट नीचे आना चाहिए था. ये सारी चीजें नहीं होंगी, राइट. Then the next thing is basically structuring of answer. Now see, again you can see that this is not a very difficult thing to do. Structuring basically means that you have to divide your answer into three parts. The first is introduction, right? You will write the introduction uh, within 10 to 12% of the total word limit. Then comes the body part, where you will write your body in the form of headings and subheadings, right? And in a point-wise format. Don't write in paragraph formats. It's make your answer look more, I would say, unorganized, right? So write it in a point-wise manner and in a well-structured format. And lastly comes the conclusion. And conclusion should be preferably, I would say, futuristic in nature. थोड़ा उसमें वे फॉरवर्ड टाइप इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है. तो वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा कंक्लूजन. इफ यू वांट मी टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू राइट कंक्लूजंस, आई कैन डू दैट, राइट. जस्ट राइट इट इन द I would say comment box, and I will bring a separate video regarding how to write conclusion, how to write introductions. But the point is that basically practice, there is no substitution for practice. Practice as much as you can. It is extremely important. And try to write your answer in a well structured format, right? And value addition बहुत important. अब ये यही value addition है जो मैंने आपको quality content में बोला तैयार करने को. तो आप बॉडी लिख रहे हो तो कोशिश करो वहां पर कुछ एग्जांपल्स एंड ऑल लिखो, ठीक है. स्पेशली एआरडी में तो बहुत आसानी से लिखे जा सकते हैं एग्जांपल, चाहे वो स्कीम्स के एग्जांपल हो या किसी टेक्नोलॉजी के एग्जांपल हो. यू कैन ऑलवेज राइट गुड एग्जांपल्स and that will help you to get an edge in the exam. And lastly we have time limit and the word limit, right? So time limit की बात करूं अगर मैं, so basically you have to respect both these criterias, time limit and word limit, otherwise you won't be able to complete your answer uh, within the provided time, right? So for the 400 word answer, I would say you should try to complete it within 18 minutes. And for the 600 word answer, I would say you should try to complete it within 24 minutes. This should be the target, ठीक है. इतना टारगेट रखो तो इसके बाद आपके पास 6 मिनट एक्स्ट्रा ही बच जाएंगे एग्जाम में. तो वो आप प्रूफ रीडिंग के लिए यूज कर सकते हो, छोटा मोटा. बट 18:24 ये अपना थोड़ा टारगेट रखो एंड इसी को दिमाग में रखकर प्रैक्टिस किया करो, राइट. एंड शुरू में आप करोगे तो ऑफकोर्स ज्यादा टाइम लगेगा, किसी किसी को 1-1.5 घंटा भी लग जाएगा एक आंसर लिखने में, बट दैट इज जस्टिफाइड, दैट इज फेयर इनफ. एंड विद टाइम आई वुड से you will see the improvisation that you're required, right? So I hope it is clear to you that what shall be the approach, what shall be the full roadmap. Now the last thing that I would like to say is that there is no substitution for practice. मैं आपको स्ट्रैटेजी जितनी मर्जी बता दूं, ठीक है, मैं आपसे जितनी मर्जी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लूं, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग थिंग्स ऑन योर ओन, you won't be able to perform well in the examination, right? This is something that I can guarantee. So practice as much as you can, sit in a disciplined manner and practice in exam like conditions.
एंड जितना प्रैक्टिस करोगे आपको खुद अपने ड्रॉबैक्स दिखेंगे, एंड यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि यार ये चीज़ मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसी चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करो एंड नेचुरली यू विल सी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट एज फार एज योर आंसर इज कंसर्न। सो हार्डली आई वुड से अगर आपने 1 डेढ़ महीना भी प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत अच्छे फ्लो में आ जाओगे, राइट? इफ यू आर डिसिप्लिन्ड इनफ टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग फॉर नेक्स्ट 1 to 1.5 month, I would say you will be in a very comfortable position with respect to answer writing practice and the descriptive paper. So I hope it is clear to you. So if I tell you the crux is that basically complete the syllabus and focus upon current affairs also. Secondly, collect value addition material, then do answer writing practice, right? This is the thing that you're required to do. एंड अगेन अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो हमें पहले ही पता था, काफी हद तक पता होगा, क्यों नहीं पता होगा? बिकॉज आई टोल्ड यू इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, अप्रोच बहुत ही सिंपल है। बट द पॉइंट इज दैट कई बार डिस्कशन करने से हमें ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है एंड वी आर एबल टू परफॉर्म थिंग्स इन अ बेटर मैनर, राइट? सो डू इट and don't procrastinate, start it from today, right? Now let me end the video, and before we end the video, let me tell you that how EduTap can help you as a part of your preparation. So you just have to go to a website which is edutap.in, then go to the courses section and about graded courses, and over here you can see that you can purchase this 1 rupee demo course, right? So this demo course is a 2-day demo course that will give you an entire idea that how the entire course is structured, and about the fact that whether the course is meeting your requirements or not, right? You will get the access to concept classes, concept notes, summary sheet, mind maps, current affair magazine, solve PYQs, chapter wise mock tests, sectional mock tests, current affair mock test, full and mock test, right? So just go to the website and you can check out the details. You can purchase the demo course at 1 rupee, and if it suits you then you can purchase the full version. If you want the access to phase 1, phase 2 and interview content, then we have the gold course. But if you want to have phase 2 and interview content only, right, then we have the silver course, and these are the prices, and the courses are available for different validities based on your requirement. You can check it out. So that is it from my end. Thank you so much and all the best.